everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now look at this question. Here we are provided with quarter disk of radius r and it has a uniform surface charge density sigma, and we are getting asked about electric potential at a point this 0 0 z, that is at a point on the z axis, and also z component of electric field at the same point. Done it? So if you look at carefully at the diagram, you can see clearly that this quarter disk is in xy plane. So line perpendicular to this plane, that is, I mean, line of normal onto it will be your z axis, right? And here, z axis will what? Will pass through the center of this quarter disk, right? So this is your center 0 0 0. So it is this z axis. अगर आप बनाओगे ऐसे बना लो, मैं यहाँ पे ऐसे बना रही हूँ. So it will be perpendicular to x-axis, y-axis, z-axis, and then there is a point in here, 0 0 z, and here you have to calculate what? You have to calculate value, potential, and also electric field. Now we can easily solve this question if we are aware of disk system, if we are aware of ring system. So यहाँ पे potential हमें निकालना है. Charge is not discrete, that we can use the formula kq by r and calculate it. This is a continuous charge distribution system, and how we can how we usually approach such sort of question. तो देखो सबसे पहला attempt ये होता है कि आप ये करो, आइडेंटिफाई द सिस्टम, सॉरी आइडेंटिफाई द एलिमेंट. सो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है. सपोज कर लो हमसे ये पूछा जाए सेम क्वेश्चन के लिए कि क्वार्टर ऑफ डिस्क नहीं है, कंप्लीट डिस्क है, एंड देन एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, लेट्स से दिस डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन, दिस इज द जेड एक्सिस. एट अ पॉइंट ऑन द axis, we have to calculate potential. How we will go around it? First of all, we will try to see what is the element of this disk. एलिमेंट क्या होता है? वो छोटी छोटी चीजें जिसको मिलाकर ये कंप्लीट बॉडी बना है. So we can say that it is made of so many rings of radius starting from 0 to capital R, where capital R is the radius of this disk. So element हमें पता है इसका ring होता है, ठीक है? Once you have identified the element, you should have information about ring. Information कहने का मतलब कि ring का formula. I mean, if you have identified element as the ring, then you should know what is the value of potential for a ring at a point on its axis. क्योंकि देखो अगर ये axis disk का है, this will be axis of all the rings of which disk is made, right? सो इस रिंग की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, सबका सारे ही रिंग का जो एक्सिस है दैट इज दिस वन. डन है. सो वी शुड नो पोटेंशियल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, पोटेंशियल निकाल रहे हो तो पोटेंशियल फॉर्मूला. सो हियर इन दिस क्वेश्चन पोटेंशियल शुड बी नोन फॉर रिंग. एंड थर्ड क्या है? आई मीन राइट small potential, that is small dv for what? For this element, right? dv for element, and then you will do what? Finally in fourth step you will integrate. ठीक है. सो अगर आप डिस्क सिस्टम से अवेयर हो तो क्वार्टर ऑफ डिस्क को आप इजिली हैंडल कर सकते हो, राइट? सो देखो कंप्लीट डिस्क के लिए किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सबसे पहले मैंने एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया और मैंने बोला कि जो एलिमेंट है वो क्या है? तुम्हारा रिंग है. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ? एलिमेंट लिया. अब देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अगर आप एलिमेंट लेते हो, यू first of all you need to look at the complete body and you should see charge is distributed where? On length, on area, or inside volume. So if charge is distributed on length, element का length लोगे. अगर तुम्हारा element ऐसा लोगे जिसके पास length हो, and अगर charge is distributed in area, in that case you will be taking element such that it will have certain area value. Then here charge is distributed in the area, right? Done है. So here you will be taking element which will have certain value of area. So I am going to take ring which has width of dr. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने इसका थिकनेस dr ले लिया. अब इसका एरिया क्या होगा बताओ? इसका आप रेडियस r ले लो. सो स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज लेंथ ऑफ दिस रिंग 2 pi r into dr. दिस इज dA. नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या है? एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, एरिया निकाल लिया, dq निकाल लो. So charge on this area क्या होगा? Sigma dA, because sigma is the charge per unit area. So sigma 2 pi r dr. So this is the value, right? Now what we will do? I mean now we need to calculate potential value at this point.
ठीक है। तो रिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, रिंग, रिंग के लिए at a point on its axis at a distance z, what will be the value of potential? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, आप देखो रिंग देख लो, सिंपल सा। रिंग के लिए सपोज कर लो इसके पास चार्ज q है, then what will be the potential because of this charge q uniformly distributed along the length of this ring at a point on its axis, क्या होगा? So let's say this point is 0 0 z. So you can clearly see that, I mean ring का element क्या होता है, small length, and in that small length we can assume that charge is point charge. So basically यहाँ पे small element dl है, and this dl will have a small charge equal to how much, lambda dl, where lambda is charge per unit length for the ring. So this is dq, and because of this dq, what will be the potential over here? So पॉइंट चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हो, यू लुक फॉर द डिस्टेंस। सो दिस इज आर, दिस इज जेड, दिस डिस्टेंस पी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, राइट? सो पी का एलिमेंट से डिस्टेंस क्या है, दैट यू नीड टू चेक। सो आर स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। सो लैम्डा डीएल इज दिस पोटेंशियल वैल्यू विल बी स्मॉल पोटेंशियल अगर आप लिखो, क्योंकि वी आर राइटिंग इट फॉर द एलिमेंट ऑफ रिंग। सो दिस विल बी इक्वल टू के डी क्यू के लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड हियर यू विल बी इंटीग्रेटिंग इट in order to get the total potential at point P because of this ring. सो ये क्या आएगा बताओ? यहाँ पे आप ये कहोगे के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट, राइट? क्योंकि रिंग का हर एलिमेंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पर ही है। एंड रिंग के हर एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी विल बी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी ये रूट अंडर होगा डिस्टेंस, ठीक है। सो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही होगा, डन है। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन, ये वाला जो है, दिस रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज द जेड एक्सिस। So each point of this ring is at is equidistant from point P, and that equidistant length is equal to root under r square plus z square. So ये भी constant है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग के लैम्डा डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर टोटल लेंथ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, इसको आप लिख डालो, लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। सो के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू ऑन द रिंग, डन है। और पोटेंशियल हमने कौन से पॉइंट पे निकाला, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। सो यहाँ भी वी आर दिस इज द एलिमेंट, एलिमेंट इज रिंग, वी आर कैलकुलेटिंग स्मॉल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट रिंग, एलिमेंटल रिंग, राइट? सो डीवी आप क्या लिखोगे, डीवी आप लिखोगे के, this is k, q is how much, small dq, that you have to write sigma 2 pi r dr, ठीक है। and this divided by what you will be writing, this is small r and this is your z, ठीक है। so r square plus z square root under, ठीक है। and then you will integrate it in order to get the answer, जो constant है उसको आप बाहर ले लो, k sigma 2 pi। now r is not constant here, क्योंकि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट चूज करोगे तो आर डिफरेंट होगा, राइट? सो आर इज वेरिएबल आर डी आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सच दैट आर विल वेरी फ्रॉम 0 टू आर। इफ यू विल इंटीग्रेट यू विल गेट द आंसर। सो कुछ ऐसे डील करते हैं, राइट? अब चलो यहाँ पे बात बनाते हैं, क्योंकि हमें जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वार्टर ऑफ द डिस्क, its element will be what, a part of ring, right? So let us take one element over here which is a ring of thickness dr. सो dr थिकनेस का मैंने रिंग ले लिया। अब देखो इसमें सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, डी ए। सो डी ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, लेंथ ऑफ दिस, ये आर्क का लेंथ हमें लिखना पड़ेगा। दिस इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री इन हियर। सो लेंथ ऑफ आर्क, लेट्स से दिस आर्क हैज ए रेडियस ऑफ आर, विल बी इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज पाई बाई 2। दिस इज लेंथ, एरिया होगा लेंथ इंटू थिकनेस, दैट इज डी आर, और width, this is area, right? So what will be the value of charge? Charge will be sigma dA, so sigma theta and r dr, this is your dq, right? So what will be the potential because of this small element at this point? So इस point का, p point का distance from each each point of this element, or you can say uh, I mean p point का distance from this ring thing will be how much, it will be equal to this is part of ring, not complete ring. So is
स्मॉल आर्क से इसका डिस्टेंस क्या है, दिस इज आर, दिस इज जेड, सो दिस विल बिकम आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि अब हमें रिंग के एलिमेंट में नहीं जाना, वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ रिंग। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फॉर्मूला इज दिस वन, डन है। सो ओनली वी हैव टू डील विथ के चार्ज एंड देन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, or overall distance of each point of this ring part from point P, और वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, इन सारे का डिस्टेंस सेम होगा। सिंपली वी हैव टू पुट द फॉर्मूला। सो स्मॉल पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, के डी क्यू इंटू सिग्मा थीटा, दिस आर कांस्टेंट, आर डी आर डिवाइडेड बाई क्या करोगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेट करो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल, जीरो से वी, and this will be how much, this will be 0 to capital R, जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर ले लो, k sigma theta, and then r dr divided by root under r square plus z square इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बट वी कैन डू वन थिंग, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप सपोज कर लो कुछ भी वाई स्क्वायर मान रहे हो, या फिर वाई कंफ्यूजन हो जाएगा, लेट अस टेक सम अदर वेरिएबल, लेट्स से मैं पी स्क्वायर मान रही हूँ, ठीक है। So take the partial differentiation on the both sides. So r is a variable to r dr, z is a constant, right? So ये zero हो जाएगा because z is the coordinate of this point p. P is fixed location in this question. So this is zero, p का 2p dp. So हमें क्या मिल रहा है, हमें r dr किसके बराबर मिला, p dp। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पहले इसका इंटीग्रेशन मैं निकालती हूँ, सिंपली इसको फोकस करती हूँ, ठीक है। सो दिस वी कैन राइट एज p dp divided by root under p square, that is p. So this dp का इंटीग्रेशन विल बिकम p। सो हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ रहा है, के सिग्मा थीटा इंटू पी। पी क्या है तुम्हारा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर लो, जीरो से आर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी के सिग्मा थीटा, जीरो से आर हमने पुट करना है, राइट। सो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड देन वी हैव टू पुट आर इक्वल टू जीरो, सो दैट विल बिकम जेड। So this is the value of potential, right? अब आप इसको further break कर लो, this is 1/4 pi epsilon naught sigma theta is how much, pi by 2, and this is your r square plus z square root under minus z, ठीक है। अब यहाँ से आप break करो, pi will get cancelled, and this is equal to sigma by 8 epsilon naught bracket root under r square plus z square minus z. So this is the potential value at a point P, which is on the z-axis basically, because of this quarter of the disk. So this is the potential, okay? And we have to calculate electric field. Here it is said that find z component of electric field at this point. So देखो यहाँ पे जो potential आया है as a function of z आया है, because we have calculated it at a point on the z axis, right? So अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, how we can do it, इंटीग्रेशन से आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट वी कैन यूज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, हम कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ डी वाई डी वी in the I cap direction. So sorry, dy dx, dy dx of potential plus dy dy potential का differentiation with respect to y plus dy dz and potential का differentiation with respect to z. This is in j cap direction, this is in k cap direction. Done it? So if we have to calculate electric field, if v as a function of v is equal to function of x, y, z, let's say, in that case we can calculate electric field along I, j and k cap direction together. Here potential as a function of z is given, and we are asked electric field along the z-axis direction, right? So we can easily calculate electric field along z-axis like minus dv by dz. So यहाँ पे आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। सो सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, डी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ डी जेड माइनस डी जेड बाई डी जेड। So this will become how much? This will become 1, and this we need to integrate, sorry, differentiate. So चलो उसको differentiate कर लेते हैं अलग से, r square plus z square half, यहाँ मैं लिख रही हूँ r square plus z square into d r square plus z square, and then this is dz,
ठीक है, this way we can do, right? And clearly we can write here half r square plus z square का power minus half into 2z. So this is very basic of differentiation, right? So this is equal to z divided by r square plus z square root under. अब देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, माइनस साइन था सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर माइनस ऑफ दैट वाज 1, राइट? सो माइनस साइन को आप अंदर लेकर जाओ, ये 1 माइनस दिस हो जाएगा, डन है? सो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे? फाइनल आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज sigma by 8 epsilon naught 1 minus z by r square plus z square root under. This is going to be your answer. I hope you've understood the system. I hope you know how to deal with continuous charge distribution system. आपने बहुत सारे क्वेश्चन करा होगा, मुझे आइडिया है, but still I thought to discuss this question so that I can include one for this continuous charge distribution system. Okay. I hope it is clear, but if you have doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.